BJP most favored to get a majority, otherwise hung. Congress is even behind the hung assembly. Congress plus, which means the Mahavikas Aghadi. Can I do a Rahul Gandhi out here, if you don't mind? You see, Rahul Gandhi had a lovely play of words. Ek hai to safe hai, and safe was Tijori. I want to do a play of words imitating Rahul Gandhi, where he says, when batenge to katenge, baatenge to jeetenge. Baatenge means distributing. Freebies. So if you have you already used it? Yes, you already with you on the show. With you on the show. But your baatenge was something else. My baatenge is giving freebies. Your baatenge was actually real. Okay. My baatenge was Vinod Tawade ji was doing it. Okay, but let me also get in. Kishore Tiwari ji. Kishore Tiwari ji, ये चुनाव इतना जरूरी क्यों है उद्धव ठाकरे गुट के लिए? क्या सिर्फ शिंदे सेना जो टूटकर चली गई और बीजेपी से बदला लेना है, या ये एक लड़ाई है जो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है उद्धव ठाकरे के लिए और उस पार्ट ऑफ शिवसेना के लिए? देखिए नाविका जी, ये चुनाव बहुत ही ज्यादा एकदम ही बॉटम लाइन पे आकर लड़ा गया है। एकदम यहाँ पे घटनाएं हुई, तो अनिल देशमुख को पत्थरे मारे गए, तो न विनोद तावड़े पैसे बांटते हुए पकड़े गए। चलिए ये सब छोड़िए, आपने मुझे पूछा था कि हमारे लिए तो अस्तित्व की लड़ाई कहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि पार्टी के ऑलमोस्ट 80% एमएलए चले जाए, बाद में फिर बचे हुए एमपी चले जाए और सब लोग चले जाए और सब लोग कार्य पद्धति पे ही आवाज उठाए। और वो सबसे बड़ा आर्गुमेंट था कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। तो अब हम पब्लिक में गए हैं, अगर हमने हिंदुत्व छोड़ा है तो लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन मैं कहता हूं, चुनाव या लोकल इस पर फोकस हो गया था। बीजेपी अगर कपास उगाने, लोग आपको हिंदुत्व की वजह से पसंद करते थे, अब लोकल इश्यूज पर पसंद करते हैं। कमाल है, वोटर ही बदल गया, पार्टी बदल गई, लोगों का सोच बदल गई, जज्बात बदल गए, आउटलुक बदल गया। बट अनीश गवांडे ऑफ द शरद पवार फैक्शन ऑफ द एनसीपी, अनीश गवांडे, stakes are so high. Many people are saying that hung assembly is possible more than the MVA winning completely. I mean, it's not exit poll saying this. This is really about Satta Bazaar saying this. Do you think Sharad Pawar can walk across to the Mahayuti if required? You know, firstly, I'm very glad that the Satta Bazaar predictions have us at the highest strike rate again, because I think that's what we did in the Lok Sabha, and I'm glad the Satta Bazaar is reaffirming faith in us now. As for the question, are we going to walk to the other side? We would have done it by now. We don't need to do it after the elections. If we have to do it, we would have done it earlier. And I think this is a turnout game. The turnouts haven't been as high as we thought they would. This has been about who can get voters to the polling booth, and I'm confident that the Mahavikas Aghadi has been able to get voters to the polling booth far better than the Mahayuti. So I wouldn't trust any numbers, and I'm not a betting man, so I'm not going to make any predictions as to how the results will turn out. But I'm fairly certain that the Mahavikas Aghadi will have a decisive mandate come 23rd November.